Welcome to ninth chapter of science, reproduction in animals. Initially, till 7th standard, you must have learnt about how plants reproduce, plants grow from seeds, flowers are their reproductive organs, etc. In this year, we are going to understand about reproduction of animals. And in animals, the most important thing to know is there are two types of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. Now, what do you mean by sexual and asexual reproduction? It's a very simple meaning. Sexual reproduction is a type of reproduction in which you have two different organisms coming together, basically a mother and a father, and one single person cannot reproduce. That's called sexual reproduction, where there is a mother and a father. But asexual reproduction, there is only a mother. There is no concept of father. When a mother and father has children, the children are of two types. Either it can be a boy or a girl, which in future will become father or mother. But in asexual reproduction, a mom gives birth to a daughter. The daughter becomes mother and gives birth again to a daughter. There is no concept of father in asexual reproduction. All right. Sexual reproduction, part 1. Try to recall reproduction in plants, which you studied in class 7. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. Can you name the parts? Do you remember words like androgyne, gynecium, stamen, pistil, carpel, pollen, ovule, ovary? These were the words from the plant reproductive system, but in this chapter we will do animal reproductive system. So animals also have the concept of male and female. Males are different from females, and the main difference is not in their body structure, it is in their reproductive parts. So 99% of the parts of male and female are same in every species: zebra, giraffe, lion, tiger, or human being. Male-female differences are only in reproductive organs. So let us study the reproductive organs of male and female. But before that, some words which you need to understand. What does a male generally give? And what does a female generally contribute? That thing is called gametes. 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 Male gamete, female gamete. कॉमन शब्दों में मेल का डीएनए. We all are made up of DNA, and male gamete means male DNA, female gamete means female DNA. And where does the male DNA come from? It comes from the sperm. And where does the female gamete come from? It comes from the egg. And what happens when the egg combines with the sperm? The size of the sperm is this small and the egg is this big. Egg and sperm, when they together combine, it forms zygote. And zygote develops into a new human being. So this is the life story of you and me, that once upon a time, all human beings were made up of their mothers and fathers' gametes. The male gamete is the sperm which enters the female body, which the egg
and becomes zygote. Zygote becomes embryo. Embryo becomes fetus. कभी देखा होगा टीवी में ऐसे एक छोटा सा प्रीमेच्योरली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग होता है जिसकी आंखें बंद होती है, and this is inside the mother's womb. This is called fetus. And after 9 months, the fetus becomes a child. So this is the journey of human beings, and let us understand the reproductive system of male first. Male reproductive organs. The male reproductive organs include a pair of testes, singular testis. बोलने में सेम होता है testis, testis, but if this spelling is used, it means plural. If this spelling is used, it means singular. 2 sperm ducts and a penis. Penis is wrong pronunciation. You have to call it penis. The testis produce the male gametes. मैंने कहा था male gamete मतलब sperm. Male gamete basically means male DNA, and male DNA is inside the sperm. So before reading ahead, let me explain you the male reproductive system from the figure. It's very, very interesting and very simple. Imagine a product like biscuit, Parle-G. What is the role of Parle-G in my life? Does Parle-G give me entertainment? No. Is Parle-G giving me knowledge? No. What does Parle-G give me? Nutrition. Parle-G transfers nutrition in my body. When I eat Parle-G, I get nutrition. तो Parle-G एक ट्रांसफर एजेंट है, और वो क्या ट्रांसफर करता है? न्यूट्रिशन. एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, स्पर्म जो एक माइक्रोस्कोपिक टेल वाला छोटा सा एक जीव होता है, the sperm is also a transfer agent. Parle-G is transferring nutrition in my body. The sperm is transferring male DNA or male gamete in female's body. तो ये एक ट्रांसपोर्ट एजेंट है, जैसे बिस्किट एक ट्रांसपोर्ट एजेंट है न्यूट्रिशन के लिए. बिस्किट बनती कहाँ है? फैक्ट्री में. टेस्टिस are the 2 factories where sperm production takes place. Parle-G बनती है पार्ले की फैक्ट्री में, वैसे sperms बनते हैं टेस्टिस में. This is factory number 1. This is factory number 2. फैक्ट्री से Parle-G को बाहर निकालने के लिए एक गेट होता है, और वो गेट के बाहर रोड बनाना पड़ता है, तो ही ट्रक में biscuit will be delivered to different places in India. So you see carefully, whatever sperm is produced in the testes on daily basis, it comes out from here and starts its journey and goes up. और ये है sperm duct. Sperm duct is nothing but a highway. Every Parle-G factory, the truck leaves daily and catches the highway to supply the biscuit everywhere. Here also, the sperm leaves the testes, comes out and takes this highway called sperm duct. ट्रक की ट्रक भर के बिस्किट क्या हमारे घर पे आके खाली करके जाते? लो कुशान भाई बिस्किट खावी छे, एक ट्रक. No. Where does the biscuit go? The biscuit goes to the godown. एक गोडाउन होता है जहां पे बिस्किट को स्टोर करके रखा जाता है. Therefore, the sperms which are manufactured in testis, transported through sperm duct, reaches a place somewhere here called
seminal vesicle. That's the end of the journey of the sperm. मैं 24 घंटे बिस्किट खाता हूं? नहीं. मैं रोज बिस्किट खाता हूं सुबह शाम? नहीं. मुझे जब इच्छा होती है कि मुझे पार्ले जी खानी है, या मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है, तो मैं बिस्किट खाता हूं. सिमिलरली, what is the point of sperm? The point of sperm is to become a father. Every married man on this planet, does he want to become father daily? No. Every year? No. तुम्हारे कितने सारे मम्मी पापा को शादी को 10 साल हो गए, तो हर साल एक बच्चा होगा तो तुम्हारे 10 भाई बहन होते, घर एक मच्छी मार्केट बन जाता. Nobody wants to become father all the time. Therefore, this sperm is stored in the male's body and not transferred to female's body. Because if the sperm is transferred to the female's body, तो pregnancy and a new child will come. Therefore, और जब तक न्यू चाइल्ड नहीं चाहिए तब तक ये स्पर्म रखने का किधर? The sperm is stored inside the boy's body, inside seminal vesicle. Apart from this, let's say this boy got married after 3-4 years. Now he wants to become a father. What will he do? And how will the sperms come out of his body? The sperms will, which are stored here, will come out from this root. जहां से बॉयज को यूरिन होता है, वो सेम प्लेस से स्पर्म्स भी निकलते हैं. And therefore, this cylindrical part, जिसका स्पेलिंग है पेनिस but pronunciation है penis, is also, it also has another name. It's called urinogenital duct. Urinogenital duct मतलब एक ऐसी जगह जहां से यूरिन निकलता है. At the same time, if that person wants to become a father, वहां से sperm भी निकले. That's enough to know about male reproductive system. I have told you 2 extra things. How many sperms are produced in the factory? Millions of sperms. लाखों करोड़ों sperms बनते हैं, but they are so small that they're easily stored inside the male's body. And what about the body of the sperm? The sperm's body is very small in size. It has a head, a middle piece, and a tail. You can see the diagram of the sperm here. Sperm has a small head. It has a middle piece and a tail to swim and reach the female's egg if the male wants to become a father and the female wants to become a mother. Female reproductive organs. Female reproductive organs are completely different from male reproductive organs. It contains a pair of ovaries. 2 ovaries. You see this part? This is the first ovary and this is the second ovary. ऐसा लगता है कोई बॉडी बिल्डर उसको ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ा है. And yes, actually the ovaries are being held. I'll tell you more in a second. So there are 2 ovaries in every female's reproductive system. Then there are oviduct. ये duct word पहले भी आया था. Duct का मतलब होता है pipeline या एक road. It's just a pipeline or a road or a pathway through which things can pass. Oviduct is similar to sperm duct, which I'll explain you in a second. दूसरा नाम है fallopian tubes. And uterus. Again, without figure, कुछ समझ में नहीं आएगा. So let us look at the figure of female reproductive system.
And again, I'm going back to Parle-G. Parle-G provides me nutrition. What does egg provide? Egg also provides nutrition. कुछ लोग egg नहीं खाते, omelette. Egg of any living organism is full of nutrition, and this nutrition is going to be used for bringing new life on this planet. जब एक नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और स्टार्टिंग में उसके पास मुंह नहीं है, दांत नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट वन सेल, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग. हाउ डज दैट वन सेल ईट? It takes the nutrition from the egg. An egg is prepared by the mother, and in mother, specifically, who produces the egg? Factory. मेल्स की स्पर्म की फैक्ट्री को टेस्टिस बुलाते हैं. फीमेल में एग की फैक्ट्री को ओवरी बुलाते हैं. सो ओवरी इज अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस एग्स. स्पर्म प्रोड्यूस होके ट्रैवल करते हैं स्पर्म डक्ट के थ्रू. वैसे ओवरी में से हर महीने एक एग निकलता है. स्पर्म कितने बनते हैं? मिलियंस, लाखों स्पर्म रोज बनते हैं. एग कितने बनते हैं? एक. वो भी 28 to 30 डेज में एक एग. दैट्स ऑल. जनवरी में ये ओवरी में से एग बना तो फरवरी में दूसरी ओवरी यूज. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने के अप्रोक्सीमेटली 12 एग होते हैं. प्लस माइनस 1 और 2 इधर उधर कभी अप्स डाउन हो जाता है. नाउ दिस एग which is made by the ovary once a month comes out of the ovary, और जैसे ही ओवरी के बाहर आता है it is captured. It's captured by the oviduct. ये जो हाथ जैसा लग रहा है, फिंगर्स जैसा, it is actually small fingers and they are sleeping for 29 days. बट हर महीने एक बार एक एग बाहर निकलता है, और जैसे ही एग बाहर आता है वो जाग जाते हैं, and they move slightly and capture the egg. So the egg starts its journey from the ovary to the fallopian tubes. Fallopian tube is just a second name for oviduct. Egg entry लेता है और अपने आप धीरे धीरे दिन निकल जाता है. ये मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नेक्स्ट वीक आ गया. इट्स वेरी स्लो प्रोसेस. द वजाइना साइज इज जस्ट लाइक अ फिस्ट, but this traveling takes a long time because it's very slow. Egg is microscopic, you cannot see it. It's सब automatic होते रहता है. And then finally the egg enters a sac. Sac એટલે bag, एक container, एक empty space, which is called uterus. और यूटेरस के नीचे होता है सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे होता है वजाइना. This is called female reproductive system. So once again, I'll tell you, the factory for production of eggs are called ovaries. Ovary produces one egg every month, alternate, and that egg is collected by the fallopian tube and it travels and sits in the uterus. अब यूटेरस में बैठ के करेगा क्या, मैं बताता हूं. एग ब्रिंग्स लाइफ. मुर्गी जब अंडा देती है तो उसमें से आइडियली वो हमारे ऑमलेट बनाने के लिए नहीं है, वो मुर्गी का बच्चा आएगा उसमें. एग मीन्स न्यू लाइफ. एंड एनी ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस एग, स्नेक्स गिव एग, टर्टल एग्स, फ्रॉग एग्स, चिड़िया अंडे देती है, पीकॉक अंडे देता है, पेंगुइन के भी अंडे होते हैं, डायनासोर के भी अंडे थे. ये सारे अंडे एक नया जीवन है. एंड जब नई लाइफ आती है घर में
गुड न्यूज बोलते हैं ना. When good news comes in your family, what does everybody do around you? ये एग है जो यूटरस में सेट हो गया है, ये गुड न्यूज है. और जब घर में कोई प्रेग्नेंट है, कोई बच्चा होने वाला है, गुड न्यूज है, तो आस पड़ोस से गिफ्ट आती है. कवर आप लो 101, 1001, 5001, सोना नो चेन, गुड लक खोड़ो भरवानो, सब टाइम पास चालू हो जाता है. वैसे बॉडी के अंदर भी सेलिब्रेशन चालू होता है. व्हेन अ फीमेल्स बॉडी produces egg once a month, and when that egg reaches the uterus, it's a cause for celebration. और सेलिब्रेट कैसे करती है बॉडी? सेलिब्रेशन का स्टाइल बायोलॉजी में अलग है. टू सेलिब्रेट द प्रेजेंस ऑफ अ एग, द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू लाइफ, ये पूरा यूट्रस, પેલી શેકની કોથળી આવે ખબર? રબરની, જૂના જમાનાની. તો શેકની કોથળી જનરલી ચોટેલી હોય, ચગદાયેલી હોય, ઇટ્સ લાઈક શ્રંક. પણ એમાં ગરમ પાણી ભરો તો ફૂલી જાય. સેમ વે ધ બોડી ઇઝ સેન્ડિંગ congratulations. The body is sending gift, and that gift is in the form of blood. बहुत सारा खून यहाँ पे जमा हो जाता है, and uterus becomes thick and full of blood. The blood filled in the back. बीच में अभी भी खाली जगह है जहां पे अंडा बैठा है. क्यों blood? Is blood a gift? Yes. Blood is the most important and very good gift for the egg, because egg is going to require oxygen. उसमें से लाइफ आएगी तो उसको ब्रीथ करने के लिए चाहिए. Oxygen is provided by blood. Lungs to the blood, blood to the uterus, uterus to the egg. कि उसमें से जब नया जीवन पैदा होगा तो उसको ऑक्सीजन कौन देगा? ब्लड. ब्लड ब्रिंग्स ग्लूकोज, ताकत. ग्लूकोज इज द मोस्ट बेसिक नेसेसरी मॉलिक्यूल फॉर एनर्जी. और नई लाइफ को एनर्जी कहां से मिलेगी? ग्लूकोज में से. ग्लूकोज कौन लाके देगा? ब्लड. सो वी ईट डेली, वी डाइजेस्ट, and that glucose goes to the blood, and blood brings it here. So blood is a good thing, blood is a gift, and blood is preparing the female's body for a new life. But क्या किसी ने इस फीमेल को पूछा कि तुमको मां बनने का है कि नहीं? It's a choice. Every female does not want to become mother every day, every month, or every year. Once or twice is enough. वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से, right? Let's say this female has decided that she does not want to become mother right now. Okay. तो क्या होगा इस अंडे का? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना. जब मार्केट में एग खरीदते हो, if you eat eggs or if you have seen somebody else eating eggs, eggs have an expiry date. हर अंडे की एक एक्सपायरी डेट होती है. वो सड़ सकता है, वो खराब हो जाता है. अब ये जो अंडा है वो राह देख के बैठा है. Egg alone cannot do anything. This is sexual reproduction. The egg has to meet the sperm. तो एग राह देख के बैठा है कि कोई तो भी स्पर्म आएगा. तो एग एंड स्पर्म से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, embryo will take nutrition from the blood, it will become a fetus, fetus in 9 months will become a child, और डिलीवरी होगी. बट ये सब मम्मी की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता. और मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे मम्मी नहीं बनना है. The female has decided she doesn't want to become a mother. 7 दिन बाद ये एग की एक्सपायरी डेट आ जाएगी. Body will automatically know, and the egg will be thrown out of the system. But egg is microscopic. जो चीज दिखती नहीं है उसको तुम बाहर कैसे फेंकोगे? बैक्टीरिया दिखते हैं तो हाथ पे बैक्टीरिया है, उसको धोते कैसे हो?
lot of water and आजकल फैशन में अल्कोहल है, ये एग को बाहर फेंकना है, तो lot of blood comes out from the uterus. बॉडी ने जितना भी ब्लड गिफ्ट में दिया था वो सारा ब्लड यूटरस में से बाहर आने लगता है, क्योंकि एग हो गया एक्सपायर एंड एग नीड्स टू बी थ्रोन आउट. और एग को बाहर फेंकने का एक ही तरीका है, सारे ब्लड को फ्लश कर लो. सो फॉर 2 to 3 days द फीमेल्स बॉडी फ्रॉम द यूटरस वजाइना विल बी थ्रोइंग आउट ब्लड. 2 दिन बाद सारा ब्लड साफ, सिस्टम रीसेट हो जाती. और सिस्टम रीसेट का मतलब है नाउ देयर इज नो एग एंड द फीमेल्स बॉडी इज रेस्टिंग. बट अगेन आफ्टर 28 days नेक्स्ट मंथ एक नया एग बनेगा. वो नया एग फेलोपियन ट्यूब पकड़ के यूटरस तक लाएगी. बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ ब्लड विल बी गिफ्टेड कंपल्सरी, and after 7 days that blood will be thrown out. That's called menstrual cycle. Menstrual cycle means every month blood comes out of uterus because the egg has to be thrown out because it is useless. इसको common language में बोलते हैं periods. Second scenario, मान लो that this female wants to become a mother. तो क्या होगा? I'll tell you what will happen. Egg will be generated. Egg will flow through the fallopian tubes and reach the uterus. हाँ, uterus में egg रहेगा, blood आ गया है, and the sperm will be allowed to enter the body by the female. And that sperm will meet the egg here. Or maybe here, कहीं पे रास्ते में मिलेंगे, but sperm and egg meet each other. If the female wants to become a mother, the sperm has to meet the egg. और जब sperm और egg मिलते हैं, उस दिन से इसका नाम चेंज हो जाता है. We call it zygote. zygote थोड़े दिन बाद डिवाइड होके बन जाता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो यूट्रस के ब्लड में से न्यूट्रिशन ले लेके बन जाता है फीटस. एंड फीटस इज अ प्रीमेच्योर चाइल्ड जो 9 महीने बाद डिलीवरी के टाइम पे जीता जागता ह्यूमन बीइंग बन जाएगा. दैट एंटायर चाइल्ड इज हियर. सॉरी अबाउट माय ड्राइंग. एंड द चाइल्ड कम्स आउट फ्रॉम हियर. दिस इज द पैसेज ऑफ डिलीवरी, द वजाइना. Next topic is fertilization. What is fertilization? I've already told you 2 times. It's basically the combination of sperm and egg. Egg is an egg or ovum. Sperm is a sperm. One contains mother's DNA, other contains father's DNA. When they combine together, the sperm literally enters the egg, and only one sperm is required, not more than one. And when one sperm combines with the egg, it is called fertilization. So let's read. The first step of the process of reproduction is fusion. Fusion matlab mix hona of sperm and ovum. When sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Fuse matlab puri tarah jud jana. This is the lucky sperm who has entered the egg completely. Therefore, the other sperms will not get a chance. Only one winner in the race. Such fusion of egg with the sperm is called fertilization. During fertilization, the nuclei of sperm and egg fuse to form a single nucleus. This results in formation of a fertilized egg. And this fertilized egg is called zygote. And zygote is the first step towards a new individual. The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and sperm cell from the father. So, the new individual inherits some characters from the mother and some from the father. खुद को देखो,
you yourself will realize that you are little bit like your mother and little bit like your father. Why? Because you are made up of a combination of DNA of your mother and father both. There are two types of fertilization. If the sperm and the egg are mixing inside the body of the female, it is called internal fertilization, which happens in many of the animals, including human beings. Internal fertilization. But when the eggs are laid, laying an egg मतलब egg शरीर के बाहर रखा और उसके ऊपर मेल आके स्पर्म्स छिड़क के जाता है, that is combination of sperm and egg outside the body, and that is called external fertilization, which happens in frogs. This is extra information जो एग्जाम में जनरली नहीं पूछते. Do you know what is test tube babies? Now test tube baby, it's a very simple concept. एक हस्बैंड वाइफ डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मुझे फादर और इसे मदर बनना है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज चेकअप. डॉक्टर ने चेकअप किया, द मेल इज परफेक्टली फाइन, हिज स्पर्म्स आर हेल्दी एंड ओके. फीमेल को चेकअप किया, फीमेल हैज हेल्दी एग्स, but still they are not able to have a child. Doctor, what he does for a test tube baby is IVF. IVF का full form है in vitro fertilization. In vitro fertilization मतलब generally the combination of sperm and egg happens inside the female's body, but in this case the doctor is mixing the sperm and the eggs in a test tube, और वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां एग और स्पर्म मिक्स होते हैं वहां से जाइगोट बनता है, एंड देयरफॉर दिस बेबी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. बट it does not grow in a test tube. It's only about few hours where the sperm and the egg are kept together. कुछ घंटे बाद जाइगोट बन जाता है और वो जाइगोट के को मदर की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते. नवी दाढ़ बेसाड़े ने खोटी दाढ़, आई में लेंस का ऑपरेशन कराते हैं, नी रिप्लेसमेंट होता है, वैसे ये जाइगोट इंस्टॉलेशन ऑपरेशन होता है मम्मी में, एंड देन शी कैरीज ऑन विथ हर नॉर्मल प्रेगनेंसी, एंड दैट्स व्हाई दीज बेबीज आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज. बट टेस्ट ट्यूब में सिर्फ 2-4 घंटे का काम होता है, रेस्ट द चाइल्ड डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी. You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside. मैंने अभी बताया frogs में external fertilization. Outside कहाँ? Water can. Water is a medium necessary for fertilization. During spring or rainy season, frogs and toads move to the ponds and slow flowing streams. When the male female come together in water, the female lays hundreds of eggs. बारिश के मौसम में पानी के अंदर फीमेल lays hundreds of eggs. Unlike the hen's egg, frogs' eggs are not covered by a shell. मुर्गी के अंडे में कड़क शेल होता है प्रोटेक्शन के लिए, but frog cells do not have that shell. They are very delicate, they are very sensitive, and they have a layer of jelly which holds the eggs together. एक जेली जैसा होता है, उसके अंदर बहुत सारे eggs होते हैं, and this jelly also provides protection to the eggs. But these are just eggs. अब तक वो fertilize नहीं हुए. Once the eggs are laid, the male deposits the sperm over them. तो आपने eggs, फीमेल ने eggs एक जगह पे रख दिए पानी में, उसके ऊपर sperms रख के आता है male, and each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact with the eggs, and this results in external fertilization. That's all. And it is very common in aquatic organisms. जो organisms पानी में रहते हैं, उनका fertilization external होता है,
such as in case of fish, starfish and frogs. This is a bad photo, but I hope you can see कि ये अंडे है और ये ब्लैक ब्लैक उसका न्यूक्लियस है. Why do fish and frog lay eggs in hundreds, whereas hen lays only one egg at a time? Reason: एक को 100 अंडे देने पड़ते हैं तब 4 बच्चे होते हैं. मुर्गी एक ही अंडा देती है फिर भी उसके बच्चे हो जाते हैं. कैसे? Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. The success ratio of fertilization is less. This is because the eggs and sperms are exposed to water movement. पानी इतना हिल रहा है कि आधे स्पर्म्स तो ऐसे ही बह जाते हैं, उड़ी जाए. अंडे भी खराब हो जाते हैं. Then sometimes there is wind जिसमें बह जाता है. Sometimes there is rainfall जिसमें extra अंडे बह जाते हैं. There are some animals which love to eat the frog eggs. Therefore they feed on them. तो कुछ नाश्ता बन जाते हैं. Therefore, large number of eggs are required. But मुर्गी के केस में ऐसा नहीं होता. मुर्गी के अंडे को ठंडी, गर्मी, बारिश, विंड, वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है. Therefore, as long as somebody takes away the egg, it can remain with the hen. Therefore, it lays only one egg, but fish, frogs lay hundreds of eggs. Development of embryo. ये भी मैंने तुमको बता दिया है. Fertilization results in formation of zygote. The first step, fertilization हो गया तो zygote बना, which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form the groups that developed into different tissues and organs of the body, and this developing structure is known as embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होती है. ओवरी प्रोड्यूसेस 1 ओव्यूल और 1 एग एवरी मंथ, और वो एग जब बाहर आता है, ये रहा, इट्स कॉल्ड ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग 1 एग फ्रॉम द ओवरी. उसको फेलोपियन ट्यूब पकड़ लेती है और एग अपनी जर्नी शुरू करता है. और जब एग अपनी जर्नी शुरू कर रहा है तब स्पर्म ने एंट्री ली थी और स्पर्म यहां मिक्स हो चुका है. एंड एग एंड स्पर्म टुगेदर आर कॉल्ड जाइगोट. एक बार जाइगोट बन गया तो 1 सेल का 2 सेल, यू कैन सी हियर 2 सेल्स, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64. सेल्स डबल होते जाते हैं. एंड फाइनली दिस इज द प्लेस वेयर इट विल एम्बेड इटसेल्फ. एम्बेड मतलब एस्टैब्लिश हो जाना, सेटल हो जाना. इसके आगे वो कहीं नहीं जाएगा. एंड यहां पे वो रियल बच्चा बनेगा इन द पीरियड ऑफ 9 months. The embryo continues to develop in uterus. It gradually develops a body. It develops hands, legs, heads, eyes, ears, etc. लेकिन जब 100% डेवलप नहीं होते हैं तब उसको फीटस बुलाते, और 9 महीने बाद उसको बोलेंगे बेबी when it is time for delivery. So this is the uterus of the female, which is housing a full grown 9-month child. This is the opening from which the delivery will take place, which is called vagina. This entire bag is called uterus. This is embryo, which is multiple cells. And this is also embryo, which is sitting in the wall of uterus. ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कुछ नहीं है. This is just for understanding purpose. How a child get developed in a mother's body, specifically in the uterus.
Internal fertilization takes place in hens also. मरघा hen में internal fertilization होता है. मतलब the sperm enters the female body and fertilizes the egg. But do hens give birth to babies like human beings and cows? No. You know that they do not. Then how are chicks born? Let us find out. Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in the hen's egg is one such protective layer. So, in the universe of reproduction, I think we have three categories now, which you must understand. एक तरफ है ह्यूमन, दूसरी तरफ है फ्रॉग और बीच में है hen. Human has internal fertilization. Hen also has internal fertilization, but frogs have external fertilization. Internal fertilization मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर the sperm and the egg will combine. Hen में भी वही होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर the sperm and the egg will combine. But external fertilization में पानी में the sperm and the egg combine. So till now humans and hens are similar, but the biggest difference between humans and hens, humans' child is inside the female's body till it is ready to be delivered. But hen's child has an external protective layer, therefore the egg is laid. और इसके अंदर जाइगोट है जो एम्ब्रियो बन जाएगा. तो फीमेल ह्यूमंस अंडे नहीं देते, ह्यूमन डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, बट हेंस इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद अंडों को बाहर निकाल देती, एंड फ्रॉग्स तो पहले ही अंडों को बाहर निकाल देते हैं. दैट आर द थ्री टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस. Soon after fertilization, the zygote divides, travels down. ये हो गया protective layer. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. तो जो अंडा दिया है उसके अंदर sperm है already. Therefore, the child will be developed automatically. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. Important objective question. You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know? In animals which undergo external fertilization, development of embryo takes place outside the female's body. Frog. The embryos continue to grow within their egg coverings. Ande ke andar hi. And after the embryos develop, the eggs hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and streams. So, it's nothing much. I have summarized it here. यहाँ से समझ लो कि क्या सिचुएशन होती. ह्यूमन, हैन, फ्रॉग. और फ्रॉग के अंडे में से जब हैच होगा तो कौन बाहर आएगा? टेडपोल. TADPOLE, which is still a kind of baby frog. And this baby frog will become mature frog later on. Hen के अंडे में से कौन बाहर आएगा? A chick, a cute little chick. और ह्यूमन बीइंग में क्या बाहर आएगा वो तुमको पता है. Viviparous, oviparous animals, they are just words, fancy words for something which you already know. Some animals give birth to young ones. The animals which give birth to young ones are called viviparous. बस हम viviparous है, उतना बाय हार्ट कर लो तो इजी हो जाएगा. Human beings are viviparous. Why? Because human beings give birth to ready-made children, जीते जागते बच्चे. So elephant, zebra, giraffe, buffalo, cow, dog, cat, rat, all are viviparous because they give birth to a living organism.
they don't lay eggs. उसका opposite होता है snakes, frogs, fishes, hens, penguins, peacocks, sparrows. Because they don't give birth to young children, those animals which lay eggs are called oviparous animals. Easy. या तो डायरेक्ट जन्म दो या अंडे दो. जन्म दिया तो विविपैरस, अंडे दिए तो ओविपैरस. The rest is just general knowledge. This is the story of how a frog develops into an adult. It's very easy. The mother lays the eggs. ये रहा egg. Those eggs are fertilized by father. And after the egg fertilizes, zygote, embryo, and the egg will hatch. So let me, ये cycle दिमाग में बिठा लो. Egg, अकेले egg से कुछ नहीं होता. Egg को चाहिए support from sperm. और egg और sperm बाहर मिलते हैं पानी में. That's why it is called external fertilization. Egg sperm मिल गए तो बन गया zygote. Zygote डिवाइड होके बन गया embryo. और एम्ब्रियो में से हैच होता है, बच्चे बाहर आते हैं. एंड दैट हैच यू गेट एन अर्ली tadpole. That early tadpole is a baby. Then you become late tadpole. Late tadpole finally becomes an adult frog. This is how the life cycle of a frog goes from young ones to adult. Observe the different stages of frog starting from egg to adult. We find that there are three distinct stages. या तो तुम अंडे हो, या तुम टेडपोल हो जिसको लार्वा भी बोलते हैं, या तुम एडल्ट फ्रॉग. Three stages. Can you imagine that these tadpoles would someday become frogs? Similarly, the caterpillar of pupa of silkworm looks very different from the adult moth. Silkworm का caterpillar ऐसा होता है, दिन भर खाते रहता है बस. But finally it becomes a kind of butterfly or a moth and flies away. So this is called metamorphosis. Similarly, the caterpillar or pupa of silkworm looks very different from adult moth. The features that are present in adult are not found in young ones. Then what happens to the tadpoles and caterpillars thereafter? They change. Caterpillar अब है ही नहीं और tadpole भी temporary होता है. It just goes away and becomes an adult. This process of changing your body is called metamorphosis. हम रेडीमेड जन्म लेते हैं, no metamorphosis. Or major animals, no metamorphosis. But frogs and this caterpillar show metamorphosis. मतलब पैदा होने के बाद जिंदा हो गए, फिर बॉडी चेंज होना शुरू होती. You must have seen a beautiful moth emerging out of cocoon. In case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. The transformation of larva into adult is called metamorphosis. बहुत सारे इंसेक्ट्स में ये होता है. तुमने मच्छर तो देखा, बट पता है मच्छर कैसा होता है? मच्छर का पहला स्टेज होता है अंडा, पानी के अंदर. अबे inside water the mosquito lays one egg. That egg becomes a larva. एक इतना छोटा सा जंतु होता है, अर्थवर्म जैसा हिलते रहता है. And that larva finally becomes a baby mosquito. And that baby mosquito will one day start flying and become adult mosquito. What about changes that we observe in our body as we go? Do you think we do metamorphosis? No. Metamorphosis are drastic changes in body. Caterpillar के wings आ गए, अचानक उड़ने लगा. Frog को अचानक हाथ पैर आ गए, वो जंप करने लगा. बट हमारे शरीर में इतने बड़े चेंजेस नहीं होते हैं because we are ready made born. But still our body has changes. Let's see what are those changes.
No, it's not given in your textbook. वो 9th standard के syllabus में आएगा that human beings also go through changes, but it is not called metamorphosis. अब तक जितना भी डिस्कस किया, फिश, फ्रॉग, लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड ह्यूमन बीइंग, सब में मेल फीमेल था. इवन मॉस्किटो में मेल फीमेल होता, because they were all sexual reproduction. Now we'll do little bit of asexual reproduction. और पहले का था asexual reproduction में there is no father. Mother gives birth to daughter, daughter becomes mother and gives birth to new daughters. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Hydra, इसकी साइज माचिस के डिब्बी जितनी होती, small organism. It lives inside the sea. And how does it grow? Budding. एक हाइड्रा में से दूसरा हाइड्रा पैदा होता है. ये है तो एनिमल, बट प्लांट की तरह ग्रो करता है. मतलब दिस इज रमा. हाय रमा, meet my students. Students meet Rama. And Rama is an adult mother. Now she wants to have a child. तो रमा को होता है छोटा सा फोडली, एक पिंपल जैसा बाहर आता है. थोड़े दिनों बाद वो और ग्रो करता है, और थोड़े दिनों बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि एक दिन रमा के बॉडी में से वो गिर के टूट जाएगा. और जब रमा की बॉडी से वो टूटता है तो इट बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट टू रमा. समझा? इसमें फादर की जरूरत नहीं. Rama alone is enough to give birth to a daughter. Therefore, this is asexual reproduction. अमीबा क्या करता है? अमीबा में भी कोई फादर नहीं है. So this is Radha. Meet Radha, my students. My students meet Radha. Radha is an adult female and now she wants to become a mother. She wants to have kids. राधा के पास एक न्यूक्लियस है. वो न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाता है दो में. जेरोक्स होती है, कॉपी पेस्ट. दो न्यूक्लियस धीरे धीरे दूर चले जाते हैं एंड साइटोप्लाज्म एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर आल्सो डिवाइडेड. बेसिकली बंटवारा हो जाता है. 4 चमची से बे तुराक बे हुराक, बे थाड़ी से एक तुराक एक हुराक, पूरे बॉडी का डिवीजन हो जाता है. एंड फाइनली literally the mother's body divides into 2 parts, and that 2 parts are daughters Sita and Geeta. This is how amoeba divides. और अमीबा का जीवन लगभग 20 मिनट का होता है. After every 20 minutes it divides. Yes. And look at one surprising thing. When living things are born, they also die. जिसने जन्म लिया है वो मरेगा एक दिन. अमीबा में ऐसा नहीं होता. Because think about it. Radha was a healthy, wealthy, wise mother. Radha gave birth to 2 daughters, Sita and Geeta. Where is Radha? Can you say Radha is dead? No. Because if Radha is dead, where is the dead body? There is no dead body. Then how can you say Radha is dead? Radha just stopped existing as Radha and she divided and became Sita Geeta. That is asexual reproduction in case of amoeba. इसमें भी फादर की जरूरत नहीं होती और इस टेक्निक को बोलते हैं बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन मींस डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स. हाइड्रा को बोलते हैं बडिंग. And story of Dolly, we will discuss it later in the classroom. It's not a part of syllabus. Thank you so much. Quiz. I will try to make it as soon as possible and send it to you. Prepare nicely. It's an easy chapter, interesting chapter. Good luck. Bye.